Somewhere in India, a newlywed begins her married life in hiding. Living as a fugitive from the family she loves, what should be the happiest time of her life has become a terrible nightmare. அவங்க கூட பேசக்கூடாது, பேசாமல் இருந்தேன்னா உன்னை காலேஜ் அனுப்புவேன், இல்லாட்டி நான் பேசினேன் இது பண்ண தெரிஞ்சுன்னா உன்னை கொன்னுடுவேன். For thousands of young women across India, what begins as a tale of romance leads to the unimaginable. As fathers, uncles and brothers turn killers, all in the name of honor. जो हुआ है ठीक हुआ है, आपको कोई पछतावा नहीं? मतलब है नहीं, थोड़ा भी नहीं, सीधा ना कटे इतना भी नहीं। मतलब आपके जवान बच्चे थे दोनों, उनकी हत्या हुई है, उसके ऊपर आपकी क्या राय? मेरी राय ठीक है, जो है अच्छा है। आगे ऐसा ही होना चाहिए, समाज को अगर बचाना तो यही होना चाहिए। Locked in this life or death battle, can these lovers find the freedom to love? Brajesh moves through his neighborhood as a fugitive. Avoiding social contact, his life restricted to work and family. His wife Anuradha spends each day in constant fear. Anuradha and Brajesh are on the run, fugitives from their own families, accused of ruining their family honor and threatened with dire consequences. मेरे को कभी ये मालूम नहीं था कि मतलब किसी को प्यार करना, किसी को इतना चाहना, इतनी मुसीबत हो जाएगी, सबको टेंशन हो जाएगी, इतना नहीं पता था मुझे। कंटिन्यू ढूंढते फिरते थे, अगर यहाँ हम लोग उनको टकर जाते तो यहाँ कुछ ना कुछ हो जाता, कुछ ना कुछ क्या हम लोग मार देते और क्या होता। आज भी उनका ये कहना कि ये लोग अगर गांव में आएंगे तो हम उनको दोनों को ही मार देंगे। Violence in the name of honor is a tradition rooted in India's caste system. If a daughter dares to marry a man outside traditional rules, the blow to her family honor justifies any punishment. And the problem extends beyond just Anuradha's parents. Brajesh's family was ostracized by the village. His sister was sexually harassed, and his nephew was threatened with jail. In India's village communities, informal committees called Kap Panchayats have long operated. These self-appointed councils have no legal authority in modern India, but continue to issue rulings. In Anuradha and Brajesh's hometown, the Kap had declared that any marriage within 8 neighboring villages amounted to incest. The young romantics were unaware of just how strongly the unofficial Kap still rules their hometown. मैं अनुराधा से अपने स्कूल में मिला था और आना जाना हमारा साथ साथ ही था। घर वालों को हम पे शक हो गया था दोनों पर, तो मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई मतलब ख़त्म करवा दी थी कि अब मत पढ़ना। तो अनुराधा ने मेरे को फ़ोन किया, वहीं पे ही हमारी मतलब चोरी चोरी छुपके छुपके से बात होने लगी। तो उसके बाद ही मतलब हमारी रिलेशनशिप चालू हो गई। As love blossomed, Anuradha decided to marry Brajesh. But her family wouldn't support the marriage, so the pair eloped. मेरे घर वालों पर ज़्यादा प्रेशर दिया था
मतलब गांव वालों ने कि गांव में एक गांव के होके ऐसा कर लिया उन्होंने आपस में, इन्हें ऐसा नहीं करना था। Bharat Singh is press spokesman for the SAF CAP, the umbrella body for Haryana's village panchayats. जो लड़के और लड़की अपने गोत्र में शादी कर लेते हैं, वो गोत्र एक मूल पुरुष का नाम होता है, यानी उस पुरुष का जो परिवार है और उसी की परिवार के लड़का लड़की शादी करते हैं, वो बिल्कुल मर्यादाओं के भी खिलाफ है और रीति रिवाजों के भी खिलाफ है। With the entire village against them, Anuradha and Brijesh were forced to move to the city, changing jobs and homes frequently so that Anuradha's family can't trace them. They now live in Delhi, and Brijesh works as a driver for a family. The problem is common in northern India, and senior Haryana policeman Satesh Balan confesses that police are challenged by cases such as these. When the entire society tacitly supports such cases, so it becomes very difficult for a policeman to get witnesses and collect evidences. The newlyweds would discover that even the authorities were against them. यूपी पुलिस तो हमें मारने के लिए चक्कर में थी। आज भी उनका ये कहना कि ये लोग अगर गांव में आएंगे तो हम उनको दोनों को ही मार देंगे। हमारे साथ पुलिस वालों ने मारपीट की। मारपीट करने के बाद हमसे कहते हैं कि हम तुम्हें अपहरण केस में जेल भेज देंगे। वहाँ से जब हम आए तो हमने हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ली यहाँ पे। But the police team that was appointed to protect them revealed the details of the young couple's whereabouts. अनुराधा के पिताजी, अनुराधा का भाई वहाँ से 2 गाड़ी भर के और एक जो हमारे गांव का आईओ था दरोगा, वो आया था यहाँ पे थाने में। The couple had to start hiding from the police as well as their families, living like criminals. हमें इतना डर था कि मतलब क्या बोलते हैं, हर 6 महीने के बाद में मेरे को मकान बदलना पड़ रहा था। सिम कार्ड बदलना पड़ता है, फ़ोन बदलना पड़ता है, कभी ट्रैक करके मेरे को ढूंढ ना लें। ढूंढा बहुत उन्होंने, हम उनके हाथ में आए। हाथ आ जाते तो वे लोग हमें मार देते। वो आज भी अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं। कानून उनके साथ है, लेकिन उनको डर है ये कि वहाँ के लोग जो है, वहाँ का जो प्रधान कह लो, वहाँ की जो खाप पंचायत है, वो कानून को नहीं मानती। So-called honor killings are not restricted to the rural north. At a secret location elsewhere in India, Pratibha is also alarmed at every knock, terrified of every sound. Her life as a family favorite shattered because she fell in love. In southern India, young couples of different castes are forced to live as fugitives for daring to follow their hearts. Pratibha hides herself in a Muslim burqa when she goes out. But she grew up in an influential and well-off Hindu family. Pratibha was a family favorite, never under pressure for anything, never required to even enter a kitchen. She was studying to be a physiotherapist, but chance brought Pratibha into contact with a Dalit boy. Dalits are considered lowly in India's traditional caste system. And Chitra, one time number மாற்றி கால் பண்ணிட்டான். கால் பண்ணதுனால ஸ்ரீனிவாசனுக்கு கால் போய் அவங்க படிப்பை பற்றி நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ண, அது இப்படி படிக்கணும் அப்படி படிக்கணும்னு சொன்னதுனால நல்லா படிப்பா, அதனால எனக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுறேங்கிற பேரில் அவங்கக்கிட்ட பேசு, நல்லா அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, படிக்க சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு என்கிட்ட நம்பர் கொடுத்தான். அவன் அப்படியே பண்ணுறான். அவனை ஜஸ்ட்
அவனை கலாய்ச்சி விட்றேன் பாரு, படிக்க சொல்கிறேனாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபோன் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு பேசலாமேன்ட்டு பேசிகிட்டே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் எப்படி தான் என்ன இது பண்ணாங்கன்னே தெரில. திருப்பி October 9th நான் ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டேன், அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். Pratibha and Srinivasan's love was firmly opposed by Pratibha's family. இனிமேல் அவங்க கூட பேசக்கூடாது, பேசாமல் இருந்தேன்னா உன்னை காலேஜ் அனுப்புவேன், இல்லாட்டி நான் பேசினேன் இது பண்ண தெரிஞ்சுன்னா உன்னை கொன்னுடுவேன். என்ன பண்ணுறது எது பண்ண, ஒரு ஃபோன் கூட பண்ண முடியல, இது பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இடையில நான் ஒரு சூசைட் அட்டம் பண்ண போயிட்டேன். அப்படி மென்டல் டார்ச்சராக இருந்து செத்து போயிடலாம் போல் இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எதுவுமே நடக்காமல் என்னை கொன்னாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க வார்த்தையாலேயே அவங்க நடவடிக்கையாலே என்னை கொன்று இன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாமல் தினம் அழுது என்னோடய லைஃப்பை நான் இது பண்ணிப்பேன். அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு நாள் எப்படியோ ஃபோன் கிடச்சி நான் சீனுக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது, என்னை தயவு செஞ்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, வெளில கூட்டிகிட்டு போயிருன்னு சொல்லி. But Srinivasan was the only member of his family earning an income. His parents were elderly. His father a retired schoolmaster. அந்த கஷ்டப்பட்டு உள்ள மாத ஊதியத்தை மாதம் குடும்பத்திற்கு 80,000 என்னுடைய சேவிங்ஸில் அனுப்பியுள்ளான். நல்ல முறையில் பணி செய்து வீட்டிற்கு அவனுடைய கடமையை முழு பொறுப்போடு செய்து வந்தான். Pratibha's desperate plea forced Srinivasan to choose between his own family and rescuing Pratibha from her torment. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கும்போது ஒரு பொண்ணு நம்மளை நம்புகிறா. த ஒன் கேர்ள் ஷீ இஸ் பிலீவிங் மீ அண்ட் எனி திங் இன் திஸ் வேர்ல்ட். ஸோ ஐ ஹவ் டு கிவ் த ஆன்சர், ஐ ஹவ் டு ப்ரொடெக்ட் ஹர், ஐ ஹவ் டு பிலீவ் ஹர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். The couple eloped, moved to a different town, and went into hiding. But they never imagined the consequences their decision would bring. Pratibha's family filed a complaint claiming Srinivasan and his father abducted her against her wishes. They humiliated and threatened Srinivasan's family. The couple lived constantly on edge. We are having some fear always. We could not able to. We used to travel in anywhere this was India. Even though if anybody will see our face, means somebody will inform to our father-in-law. He will have the political background and gundas. He will do something for us. கொஞ்ச நேரம் ஃபோன் பண்ணலைனாலும் இல்லை ஏதாவது கொஞ்ச நேரம் ஆளை காணலைனாலும் அவ்வளோ பயமாக இருக்குது. எங்கே போயிட்டாங்க, என்ன பண்ணிட்டாங்க தெரியல, ஃபோன் அட்டன் பண்ணல, ஐயோ இவங்க யாரும் பார்த்துருப்பாங்களோ இது பண்ணியிருப்பாங்களோ, ஒவ்வொரு நிமிஷமும் பயத்துலேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில நேரம்லாம். இப்போது இவங்க ஆஃபீஸ் கிளம்பி போயிடுவாங்க. ஆஃபீஸ் கிளம்பி நான் வீட்டில் தனியாக தான் இருப்பேன். நான் தனியாக இருக்கும்போது எப்போயாவது ஒரு டோர் க்ளோஸில் இருக்கும். ஒரு சில நேரம் யாராவது கதவு தட்டினா யாராக இருக்கும், யாருமே இங்கே நமக்கு யாருமே இல்லை, யார் வருவா தெரிலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டே ஒரு சில நேரம் பயத்திலே ஓப்பன் பண்ணுவேன். Srinivasan is guilt-ridden that he has brought trouble to his family instead of providing for his elderly parents and 5 sisters. என் பிள்ளை கைக்கு வருவானான்னு நினைக்கலங்க. நாங்கள் ஒரு கௌரவமான குடும்பம். எங்கள் குடும்பத்தையே அசிங்கப்படுத்திட்டாங்க. 10 ஊருக்கு 10 ஊர். நான் அப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துங்க. My father-in-law has done that these kind of mistakes and all. Because of that, my father is என்னுடைய ஃபாதரோட இது எல்லாமே போயிடுச்சு அவருக்கு. அதனால் எங்கள் அப்பாவை வந்து நான் இன்னும் அவரோட ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஐ குட் நாட் ஏபிள் டு see. என்னுடைய ஃபாதரோடைய இமேஜ் போயிடுச்சு. என்னுடைய ஃபாதரோட அந்த அவர்கிட்ட இருந்த சந்தோஷம் எல்லாம் போயிடுச்சு. அது என்னுடைய ஃபேமிலியில் எங்கள் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டாங்க. சீனோட வீட்டுக்கு நிறையா இது பண்ணியிருக்காங்க. நீ இப்போ அவன் பையனை வர சொல்லனா உங்கள் ஃபேமிலியோட கொண்டுடுவேன், இது பண்ணிடுவேன், அவங்கள எங்கே பார்த்தாலும் கொல்ல சொல்லிட்டேன். I cried a lot because அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் why we have taken the unnecessary this risk. But the only thing that girl who has believed me, she wants to live in the world.
So that is a humanity also included in my heart. Then police raided Srinivasan's family home at midnight, hammering at the doors and windows. அப்படி நாங்கள் பயந்து கொண்டு கதவை திறக்கவில்லை. அடுத்ததாக அவர்கள் கண்ணாடியெல்லாம் வந்து தட்டினார்கள். உடைத்து விடுவேன், வெளியே வா அப்படின்னு. கடைசியில் நாங்கள் சரி நம்ம பெண் பிள்ளைகள் நம்மளை என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு நான் ஒரு பயந்து கொண்டு தான் கதவை திறந்து கொண்டு என்னை கழுத்தை பிடித்து வெளியே தள்ளி என்னை அவர்கள் ஜீப்பில் உட்கார வைத்து கொண்டு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தினுடைய பெண் போலீஸ் காவல் நிலையத்தில் என்னை கொண்டு போய் விட்டுவிட்டார்கள். Father, he has called to my sister. He has cried a lot because he told to my sister, please come early, otherwise they will kill me, because they are torturing me, because they are totally the police and everybody there belongs to their caste. ஸ்டேஷனில் போய் நாங்கள் போய் இது பண்ண சரண்டர். Pratibha made a formal statement that she had married Srinivasan out of her own free will. But it had a disastrous effect. இன்ஸ்பெக்டர் என்னை வந்து ரொம்ப ஹார்ஷான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி திட்டி என்னை அடிக்க வந்தாங்க. அடிக்க வந்ததில் நான் ஓடின இதில் எனக்கு சாரி ஸ்லிப் ஆகி அபார்ஷன் ஆகிடுச்சு. அந்த அபார்ஷன் ஆனதில் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு சரி யார் கூட இருக்க என்ன பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டாங்க. லாஸ்ட்டில் அந்த அபார்ஷன் ஆனதுக்கப்புறம் தான் என்னை சும்மா விட்டுட்டு போனாங்க. இன்ஸ்பெக்டர் வந்து எங்கள் அப்பா கிட்ட 1 lakh பணம் வாங்கியிருக்காங்க. The couple went back into hiding. But news of another young couple revealed just how real their danger is. In the district of Rohtak in Haryana, there has been a gruesome so-called honor killing. The alleged culprit is unrepentant. जो हुआ है ठीक हुआ है, आपको कोई पछतावा नहीं? मतलब है नहीं, थोड़ा भी नहीं, सूखा ना कटे इतना भी नहीं. मतलब आपके जवान बच्चे थे दोनों, उनकी हत्या हुई है, उसके ऊपर आपकी क्या राय? मेरी राय ठीक है, जो है अच्छा है. आगे ऐसा ही होना चाहिए, समाज को अगर बचाना चाहिए. September 19th, 2013. Echoes of a brutal night belie the calm of Ganawati village in the North Indian state of Haryana. Villagers gather to see what has been happening. The daylight reveals an ugly truth. The beheaded body of a young man lies in full view, limbs broken. There are remains of a hurried attempt to cremate another body. Police arrive, and eventually half-burnt parts of the body are recovered from the fire. No one is willing to speak to the police about what has taken place. But one person agrees to speak to us, as long as he remains anonymous. रोहतक के गन्नावटी गांव की ये घटना है, जो कि एक ही गोत्र के एक ही गांव के लड़का लड़की प्यार करते थे. प्यार करने लगे तो उन्होंने क्या किया कि शादी करने की सोची उन्होंने, रोज शादी करने के लिए यहाँ से भाग गए. The cremated remains were the body of a young woman, 20-year-old Nidhi Bara. The man was her boyfriend, 23-year-old Damendra Bara.
They had known each other since they were children. They lived in the same village, played together, went to the same school. Later, Nidhi enrolled in a fine arts course at Rohtak College, where Dharmendra was doing an IT diploma. हर भाई लेके जाना कि आज आठवीं दिन हुआ 4 बजे ही लेके जाएगी रात में नहीं आई यूँ बोला आज तो चोरी रात में नहीं आई नींद नहीं आई चोरी तो घर आई छोड़ दो ना वो भाई किसी ने बता दी गांव के छोरा लेके However, before long, Nidhi and Dharmendra ran out of money and called a friend to help. The friend asked to meet at a roadside eatery. When they arrived, the runaway couple were accosted by the girl's father and other relatives and forced into a car. They were taken back to the village. वहाँ से उनको गाड़ी में बिठा के लाया गया, बेटा कोई बात नहीं, आपने ये कदम उठा दिया, आगे इस तरह मत करना। घर पे लाके पहले लड़की की हत्या की गई, फिर लड़के की गर्दन काटी गई बेरहमी से। Post-mortem reports show that Nidhi too was beheaded. Her body was hacked into 6 parts. Her boyfriend Dharmendra was stabbed many times. His legs and arms were broken. He was then beheaded and thrown outside his family's house. Eventually, police questioned the girl's family. The couple was killed in full public view. Nidhi's father, mother and uncle were arrested for murder. आपको कोई पछतावा नहीं, मतलब है नहीं, थोड़ा भी नहीं, सूखा ना कटे इतना भी नहीं, मतलब आपके जवान बच्चे थे दोनों, उनकी हत्या हुई है, उसके ऊपर आपकी क्या राय? मेरी राय ठीक है, जो है अच्छा है, आगे ऐसा ही होना चाहिए, समाज को अगर बचाना तो यही होना चाहिए. This is the ugly face of India's so-called honor killings. Condemning thousands of young women to lives of terror. Communities insist that such acts are a personal matter and retaliate if police or media try to intervene. Many cases go unreported. The true number of killings is thought to be many thousands each year. Honor killing is basically rooted into structure of society. Dr. Chowdhury is a sociologist and a member of the Haryana Administrative Reforms Commission. In a male-dominated society with strong patriarchal structures, sexuality of women is controlled by the male, and any deviation from it is taken as an affront, as an insult to the honor of a family concerned. Villagers in Rohtak insist the killings are justified in the case of unapproved marriages. गांव लेवल पर हम इस बात ने कतई जो है ना जीरो मानना है कि भाई गांव में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो समाज है वो अलाउड नहीं करता. गांव में शादी जो है ना हम कोई नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकता. आप सभी से पूछताछ कर सकते हैं. मेरी लड़की अगर इसी गांव में शादी हो जाए तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी जी, कानून चाहे कुछ भी हो, ऐसा मजबूरन मुझे करना पड़ेगा. इस बात के मेरा भी गवांड भी सारा गांव इस बात के विपरीत. लेकिन With the caste system officially outlawed 60 years ago, the concept of honor and restricting women's marriage choices maintains caste power. After the Rohtak murders, National Commission of Women's President Shamina Shafiq finds the combination is such a powerful force that even those close to the murdered couple feel unable to speak out. उनके लड़की साथ में थी, हमारा लड़का साथ में. आपका बेटा गया, आपका भाई गया. वो बात आपकी मानिए, मैं आपको मारिए, समझ
समाज क्या कहता है यहाँ पर? पर हमारे समाज होता है गाँव से निकाल देते क्या करते हैं, फंस जाते हैं काम हमारे। तो इस डर से आप लोग पुलिस को करते हैं? बड़ा पड़ता राम राम। जो डर व्याप्त कराने की कोशिश कर गई है, जितनी ब्रूटली मर्डर करके उसके बाद उस घर के सामने ले जाकर डाला गया है, उसका रीज़न यही था कि पूरे गांव में या आसपास के गांव में मैसेज जाए कि ये करना अगर करोगे तो ये हशर होगा। Supreme Court lawyer Colin Gonsalves feels these so-called honor killings are a response to a new freedom of choice and independence among women. Traditional community leaders are scrambling to retain control. They believe that this custom is sacrosanct, above the constitution, above the law. And what they do is they kill their children. And they kill their children in the most brutal and public way, so as to make a spectacle of their children so that others will not follow suit. It's the most barbaric practice that this country has ever seen, the most horrific, evil custom that this country has ever seen. Bharat Singh, president of the Saf Karp, the umbrella body for Haryana's village committees, denies the Karps are behind the honor killings. खाप पंचायतों का कोई मसला नहीं है, किसी भी खाप पंचायत ने ऐसा किया ही नहीं कि भाई वहाँ मर्डर हुआ, ऑनर किलिंग हुआ और खाप पंचायतों ने उसका पानी बंद कर दिया। ऑनर किलिंग आज जो हो रही है वो पेरेंट्स के द्वारा हो रही है, भाइयों के द्वारा हो रही है। Professor Santosh Dahiya is woman president of the Saf Karp. किसका प्रेशर है? ये प्रेशर किसी और का नहीं है, उनका अपना प्रेशर है, क्योंकि वो जिस कस्टम को सालों से निभाते आए हैं, उनको ये लगता है कि हमारे बच्चे ने बहुत गलत स्टेप उठा लिया और उस तैश में आके, गुस्से में आके वो इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं जो कि गलत है। No panchayat or khap directly conspires a murder. But what happens, there is a kind of indirect pressure over the family members by the way of taunting, by the way of teasing the family members in public, just sarcastic comments. So it humiliates the family members and ultimately they turn up to this kind of killing. But victims' rights campaigner Inderjit Singh, the only Haryana politician to openly criticize honor killings, suggests they have little to do with protecting morals and traditional values. Why a rape taking place in the same brotherhood, in the same village and the same gotra? Why that is not a dishonor? Why female feticide is not a dishonor? So those should actually be the things which should be the parameters of measuring an honor of the society or a community or a family. Yet the Karp influence in India appears to be growing. And Karps are now demanding that the Supreme Court amend the Hindu Marriage Act, which Karps say should protect Hindu culture and require parental and village consent for all marriages. यदि ये अमेंडमेंट नहीं होता, हम ये झंडा उठा के राजनीति में आएंगे और ये बदलाव करेंगे आगे। The spread and influence of the almighty Karps seems unstoppable, as Seema and Chandrapati would find out. मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना कुछ मतलब पंचायत कर देगी या पंचायत का ऐसा रूप हम सबके सामने आएगा। मैं तो इनको ये भगवान ले ये तो बदला मेरे इनके अनुमार ये इनके छोरे तरुआ दिक्कत करे जब मेरा ठंडा कलजा होगा। In Kaital district of Haryana, North India, the brutal beheading of young lovers in Rohtak brings back terrible memories of a case that brought honor killings to the headlines and shattered Seema's and Chandrapati's lives. बार बार वही तस्वीर सामने आती है कि उन्होंने मनोज बबली को पता नहीं कितने बुरे तरीके से मारा होगा, कैसे कैसे तड़पाया होगा। सारा तो सुतरा था तो
और इतना शरीफ जो मैं शरीफ कदे भी को नहीं लड़ा मेरे गल कदे भी। Chandrapati's son, Manoj, worked at an electronics shop opposite the school where Babli studied, and eventually the two became friends. Manoj's mother noticed. फ़ोन आया जब पता लग गया भाई कि फ़ोन क्यों कर रहा है घरा के काम है। मैं उसकी माँ ने कहा कहीं घर भाई अपनी ने डांट ली फ़ोन आवा घरा। फिर बोली कि मैं तो कौन डांट दी। फिर मैं वहाँ जो कुछ हो गया जो फिर वहाँ ना कहिए इसने कुछ भी। Manoj and Babli realized that their relationship would not be accepted in the village, so they eloped. But Babli's family tried to draw the couple out of hiding with a formal complaint to the police. Lal Bahadur became Babli and Manoj's lawyer. बबली के परिवार वालों ने मनोज और मनोज के परिवार वालों के खिलाफ 364 का किडनैपिंग का एक मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसी मुकदमे में खाप ने और वहाँ के आसपास के डोमिनेटेड लोगों ने दबाव बना करके मनोज और मनोज के परिवार वालों को गिरफ्तार करवाना चाहते थे। पंचायत आके कह दी मेरी माँ को कि बता दो कहाँ पे हैं, नहीं तो फिर तुम्हारे भी 2 लड़कियाँ हैं, अगर इनके साथ कुछ भी ऐसी बात होगी ना तो फिर ये मत कहना कि मतलब क्या कर दिया। Manoj and Babli went to court to get official backing. The court confirmed that their marriage was legal, angering her family and the region's dominant Jat community. हम इस आशा पे थे कि लड़की हमारे हक में बयान दे देगी, लेकिन इत्तेफाक से 2.5 महीने रहने के कारण उस लड़के ने वो अपने बस में कर रखी थी और उसने हमारे हक में बयान नहीं दिया, जिसकी वजह से हम मायूस होकर सारा काम अपने घर चले आए कोर्ट से। Community consent for marriage is a particular concern for Haryana's Jat community. हमारे यहाँ कोई आर्य समाज मंदिर बना हुआ है, कोई हिंदू मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे चढ़ावा लेते हैं 1100 रुपए का और एक मैरिज सर्टिफिकेट जो घर से भाग के जाते हैं उनको दे देते हैं। क्या उनको नहीं चाहिए कि 2 गारंटर, 2 गवाह, 2 उनके माता पिता या कोई गांव का सरपंच, गांव का कोई नंबरदार या कोई गांव का मुख्य आदमी जहाँ से वो आया है उनकी पैरवी करे कि हाँ जी इनकी शादी कर दो। लेकिन 1100 रुपए के चक्कर में आप मैरिज सर्टिफिकेट उनको पकड़ा रहे हैं, क्या ये अपराध नहीं है? जैसे ही इस बात का खाप के लोगों को, बबली के परिवार वालों को पता चला तो वो आग बबूला हो गए और उन्होंने बबली और मनोज का पीछा करना शुरू कर दिया। वहीं से पुलिस की जो कार्य प्रणाली जो थी वो भी बड़ी ही एक शर्मनाक रही। Babli and Manoj left court with a police escort. But one of the police seemingly tipped off Babli's relatives. They would put them on a public bus to Delhi. पीछे से गाड़ी वो लगा रखी थी उन्होंने बस के, तो बस के आगे उन्होंने गाड़ी को रोक दिया। उस बस में से मनोज बबली को बुरे तरीके से पीटते हुए उन्होंने उतारा। फिर उतारने के बाद उन्होंने उस गाड़ी में ठूंस लिया उनको दोनों को और फिर चले गए। और फिर रात को उन्होंने खेतों में उनको मतलब मारा है बहुत ही बुरे तरीके से। बबली को जो खेतों में डालते हैं ना दवाई, पेस्टिसाइड, वो पिला दी और उसके बाद मनोज को मतलब खूब पिटा। फिर उसके बाद रस्सी से सबने मिलके मतलब उसको गला घोंट के मार दिया। बबली तड़प रही थी क्योंकि जहर जाने के बाद तो आदमी की सांस एकदम से तो नहीं निकलती, वो तड़पती रही। ये बड़ा ब्रूटल मर्डर था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हमने देखा
और उन दोनों की हत्याएं करके और रस्सियों से बांध के उनको और नहर में डाल दिया उन्होंने। सारा गांव ने एका कर लिया, किसी ने नहीं बताया। अकबई ने नहीं बन रही है खेता में, हम टूंढते फिरा। 10 दिन तो नहीं रही, पा जाएंगे कतोड़ियाँ बिक गया होंगे। कोई नहीं कराया फ़ोन उनने। फ़ोन क्यों करें जब फ़ोन ने कोई इसका भगा दिए, रख लिए, कत्ल कर दिया उसे, रात लिया कर खेता। Attempts to get the police to investigate Babli and Manoj's disappearance came to nothing. 15 तारीख से लेके और 1 जुलाई हो चुकी थी। हमें पता तक नहीं कि हमारे बच्चों के साथ इतना बुरा हाल किया है इन लोगों ने। कोई भी आदमी गांव में आवाज़ तक उठाने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि खापों का इतना दबाव होता है, उनका इतना टेरर होता है, कोई आदमी कंप्लेंट नहीं कर सकता। फिर 1 तारीख को पुलिस का मैसेज आया कि वहाँ पे 2 डेड बॉडी मिली हैं, एक लड़का और लड़की की, और आपको शिनाख्त करने चलना है। और फिर वहाँ जाके देखा, जिनमें उन्होंने पैक किए हुए थे, पलंदे बना रखे थे, तो वो खोलते ही इतनी बदबू, मतलब इतनी बदबू हो रखी थी उन कपड़ों में, और इतने बड़े कीड़े चल रहे थे उनके अंदर। जो जेवर वगैरह थे, पायल वगैरह थी, वो हमें पता लगा कि मतलब ये बबली के हैं। और जो मनोज की शर्ट थी, जब मैंने उतार के देखा, यहाँ पे कोई और कलर आ रहा था और जहाँ पे टंगी हुई थी वहाँ पे कुछ और कलर था। फिर हमने वो थाने के अंदर धो के ताकि कंफर्म हो सके कि इसका कलर क्या है। तब जाके कंफर्म हुआ कि ये मनोज की ही शर्ट है। तब जाके इन्होंने गिरफ्तारियाँ की। But Seema's and Chandrapati's nightmare had just begun. The problem, especially in Haryana and Khab belt, is that the law enforcing agencies, police, administration, and politicians, they have the same mindset. So they tend to support the Khab because of this vote bank politics. The power that the cops wield became clear to Seema and Chandrapati. A senior police officer refused to take Babli and Manoj's killers into custody, claiming it would disturb public order. And when they were eventually brought to court, a judge excused himself to avoid hearing the case. I was surprised, और मुझे भी सच पूछो बड़ा एक महसूस होने लगा था कि इस केस में क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हम इसकी प्रोसीडिंग को आगे लेकर के चलेंगे। Eventually, Lal Bahadur got the murder charges heard before another judge, who delivered a landmark judgment. Babli's brother, 3 uncles, and a cousin were given a death sentence. So too was Gangaraj, who had led the village outcry. An eyewitness identified him as one of those involved in the attack. It was the first time the death penalty had been given for a so-called honor killing. However, when the accused appealed, the High Court reduced the death sentence to life in prison. Gangaraj was acquitted completely. मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना कुछ मतलब पंचायत कर देगी, या पंचायत का ऐसा रूप हम सबके सामने आएगा। Seema and Chandrapati have now gone to the Supreme Court, but their case is still before the courts, 6 years after the killings. And life is a struggle. They are shunned by their community. They have lost Manoj's income. Nobody will give them work or even sell them supplies. But they are determined to continue their battle. सबको फांसी की सज़ा हो और जल्दी से जल्दी हो। मैंने सोच लिया है कि मैं तब तक लड़ूंगी जब तक उनको सज़ा नहीं हो जाती। सज़ा होने से ये है कि दूसरों को जो ऐसा करते हैं या करने की सोच रहे हैं, अपने बच्चों के लिए उनकी ऐसी मानसिकता है, तो उन पर थोड़ा रोक लगे उससे। मैं तो नहीं कोई भगवान ले ये तो बदला मेरे बेटे का, इनके अनुमार्य इनके छोरे तरुआ है तो क्यों करे, जब मेरा ठंडा कर्जा होगा। But there is some cause for hope. Others are increasingly challenging the cops. Evidence,
a Madurai-based organization working to combat honor crimes, came to the aid of Pratibha and Srinivasan. For several months, the fugitive couple have been living in hiding for fear of death threats from Pratibha's family. அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து எங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு ரொம்ப பயந்து தான் வந்தாங்க. My father-in-law is a very biggest man. Once they will catch us, they will kill there itself also. வந்து முக்கியமான ஒரு பொலிட்டீஷியன், நல்ல ஒரு பொசிஷனில் இருந்தார். அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு கிங் மேக்கர் மாதிரி எல்லாமே யாரை டிசைட் பண்ணுறது, மினிஸ்டர் லெவலில் யாரை வந்து பொலிட்டிஷியனை மாற்றுறதுன்ற அளவுக்கு ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸான ஒரு ஆள். My wife is explaining everything to Kadir sir. He is seeing my face, but I'm fearing a lot that time. Even though he is not at all bothering about these things actually. He has taken the simple manner. You don't afraid. So you came here, we are here to take care of you. The evidence organization helped Pratibha and Srinivasan to get a lawyer and fight back. Even when the couple Srinivasan and Pratibha came to the court with very fear, that girl Pratibha used Barda as a Muslim woman. She came to the court, and that Srinivasan also have a very life threat. When they came to the court, up to they leave the court, they did not feel a very in safe manner. But the courts ruled in the couple's favor, ordered police protection for Pratibha and Srinivasan, and allowed them to return home together. எத்தனை இடையூறு வந்தாலும், எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும், என் மகள் 5 பேருடன் 6வது மகளாக வைத்து என் மூச்சு உள்ளவரை அதை நல்ல முறையில் நிலைநிறுத்தி காட்டி பாடுபடுவோம், காப்பாற்றுவோம். இது எல்லாம் வல்ல ஆண்டவனுடைய உறுதிமொழியாக நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். He is loving very much for his daughter. So because of that thing, it is reflected on my parents' side. So அந்த ஒரு கண்டிஷன் தான் அவர் எங்க மேல அந்த வெறுப்பு உண்டாக்கி என்னைய he wants to kill me first of all, because I am the person who occupied her whole heart. So it's means more than my father-in-law. So that's the one criteria is there. So அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் அவர் ஏத்துக்க முடியல. While the shadow of fear remains for Pratibha and Srinivasan, the love surrounding them lends strength. For Anuradha and Brijesh too, the hope of a better future gives motivation. But the power of the cops may persist unless more politicians like Inderjit Singh are willing to speak out. The mainstream political leadership not only refuse to take a stand, but even try to justify what is happening in the name of honor killing, or to justify the role of extra constitutional bodies like CAPS, etc. Actually, they have a vested interest. It's not the question of honor killing alone. It is the traditional structures in which their very politics is getting perpetuated. But the traditional structures may soon be overwhelmed by an even more potent force. Even in India's most remote village communities, ancient tradition is colliding with modernity. A new generation will increasingly grow up in a different world. While they may not yet have fully shaken off the shackles of the past, the new world ahead belongs to this younger generation, and they will soon become a determining factor in elections. We must have an uprising of young people protesting against this old custom. The right to love should be seen as a fundamental right. In one of these cases, I'm going to ask the judge to say the right to life includes the right to love. It has never been said. The right to life includes the right to love. Love any person of your choice. फ्रीडम मतलब एक ऐसा चीज़ है इंसान के जीवन में कि जिसका दूसरा विकल्प नहीं है. तो जो अपनी फ्रीडम के हिसाब से जो चूज़ करता है, जब
तो डेफिनेटली उसके अंदर एक ज़्यादा डिग्निफाइड लाइफ की, डिग्निफाइड रिलेशन की जगह जो है वो क्रिएट होती है। और उस परिवार के अंदर जब बच्चे जो हैं जो पलेंगे, उनसे पैदा होंगे उस दंपति से, वो भी डेफिनेटली मतलब उन विचारों के संपर्क में आके एक अलग तरह के इंसान होंगे। वो इस तरह की जो जाति व्यवस्था है या जो पितृसत्तात्मक ये समाज है हमारा, वो इसकी मूल्य मान्यताओं को नहीं मानेंगे, उनकी अपनी मूल्य मान्यताएं होंगी। One day soon, might these fugitive lovers finally find the freedom to love.